Okay, I think now it is working. क्या हो जाता है भाई इसको? हर बार का ही मतलब। तो चलो, डिजाइन। ओके, हम लोग कुछ डिजाइन बनाए थे, राइट? वी मेड सम डिजाइंस। We made some design, this kind of, but I need to understand कि file, uh, you know, recent, that will be open design. Uh, तो कौन सा दुकान है? तो ये वाला दिया, लेकिन ये गलत है, आपको उसके अंदर जाना चाहिए। छोड़ो, डॉट प्लॉट के अंदर आई थिंक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। इससे बात कर रहा था क्या? इसके बाद टॉकिंग टू प्लॉट और डिजाइन तो यूआई मॉकअप्स में आई थिंक देख रहा था कुछ। यूज द फ्रंट एंड स्केच टू क्रिएट। ओके, इधर से क्रिएट किया, ठीक है। क्या क्रिएट किए थे आपको नहीं पता? तो एक काम करते हैं, इसको पूछते हैं दैट। ओ हाँ, आ गया था। एंटी ग्रेविटी से पूछ रहे इससे पूछ रहे थे। व्हाई इज दैट? सेट वाला नहीं है इसके पास। माय फाइल्स, माय फाइल्स इंटरेस्ट। भाई टेस्ट करो। आई थिंक आई यूज दिस, इसके एजेंटिक वर्जन यूज कर रहा था। एंटी ग्रेविटी 3.6 आ गया, oh my god, nice। अपडेट हो रहा है। एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट, नॉट बिकॉज दे आर द। हाँ, मैं बोल रहा था कि क्यों हम लोग यूज कर रहे थे, व्हाई वी आर यूजिंग ओनली इंडेक्स, मतलब एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, व्हाई नॉट अदर्स? सो इट्स बिकॉज वी आर changing the summary of the full work tree। थोड़ा बड़ा नहीं कर सकते? स्टार्ट अपडेट हो जाए पहले, फिर देखते हैं। I don't need this ID, I need only the agentic mode to understand basically how it is working। तीन चीजें नहीं रख सकते क्या एक साथ? Yeah,
इधर ये आ, डिजाइन ये कहाँ रखेंगे इसको उधर इंस्टॉलर ठीक है, कोई नहीं भाई, रुकेंगे इधर ही। हाँ भाई तो नहीं चाहिए ग्रेविटी प्रो, फिर भी अच्छा ही दिख रहा है, देखो, अच्छा दिख रहा है, फॉर्मेटेड नहीं है बट ठीक है, सही है। तो बोलता हूँ कोड समझ जाए, इंटीग्रेटेड ब्राउजर भी देखना है, इसका मतलब इसको ओपन इंटीग्रेटेड ब्राउजर पे निकाल देता हूँ। क्लॉड डिजाइन तो हम लोग के पास हो गया, तो क्लॉड डिजाइन को बंद कर दो और इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, हाँ हाँ, रख दिया इसको, ऐसे रखो। I like to eat you want. Fine, okay. Meaning how UI, HTML, CSS, JS internally works and why these are only used. Okay, वो भी बोल रहा था that अभी अपडेटेड ब्राउजर में सिर्फ यही यूज होता है और कुछ हम यूज नहीं कर सकते। बोलता है एवरी डिवाइस ऑन कांट रन डायरेक्टली, मतलब दूसरे जो लैंग्वेजेस है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हम लोग, they either compile to JavaScript or use WebAssembly. It still needs JS to talk to the web page. Or your uh, उसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो ग्राफिक्स, HTTP, वेब फ्रेमवर्क, वेब आरटीसी, वेब आरटीसी आई थिंक पीयर टू पीयर वीडियो कॉल्स में यूज होता है, ओमेगल जैसे प्लेटफॉर्म्स जैसे स्टोर डेटा, कुकीज, कुकीज, स्टोर डेटा, कुकीज, वर्कर स्टोरेज, कैमरा, माइक, जीपीएस, ब्लूटूथ, यूएसबी, गेम पैड, नीडी इंस्ट्रूमेंट्स। हैवी कंप्यूटेशन भी रन कर सकता है, और वेब जीपीयू मतलब ग्राफिक्स कार्ड भी यूज कर सकते हैं हम लोग। AI ML run ML models, speech to text, service worker sketch, okay, fingerprint, encrypted communication, okay, games, audio synthesis, pick and pick, full screen. Basically, just access files without permission, install system hardware or access file without hardware, directly touch the OS kernel. Everything else the browser can handle. मतलब kernel पकड़ नहीं सकता, जैसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता। ओके, तो इतना तक तो हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आप मॉडल ऑटो में ही रखते हैं 3.7 आगे राइट, क्लाउड ओपस 4.6 वर्सेस 3.7।
एज क्लासिफिकेशन चाहिए भाई, मुझे बस ये दिखाओ which which can be the best. 5. Sir, Gemini is not in the list. Oh my gosh. Cost per task, speed, intelligence. Gemini is not in the list. Oh my gosh. David, man. Then let's use now let's check how in this project HTML is and what all are present to understand deeply every concepts one by one. Okay. If I was your boyfriend, never let you go. If I was your boyfriend. वो दिख भी नहीं रहा, दिख भी नहीं कर रहा भाई. HTML पर देखते हैं. Head, body, HTML. ओके, HTML के अंदर हेड और बॉडी है. हेड के अंदर मेटा टेक्स्ट है. मेटा टेक्स्ट क्या होता है भाई? टाइटल, आई थिंक ये टाइटल. डिस्क्रिप्शन. ओके, टाइटल फट गया तो डिस्क्रिप्शन आएगा. कलर स्कीम डार्क. सब हटा दो. ठीक, कैसे दिखेगा? Oh my gosh, damn. It is working. कुछ दिख तो नहीं रहा. कुछ काम सबका कुछ काम तो दिख नहीं रहा. ज़्यादा चेंजेस है नहीं वैसे. The user wants to go through. अरे yeah, I want to go through. लेकिन ठीक है, तुम जल्दी तो जाओ. आधा घंटा लगा रहे हो. The X-Men, you're the man now. और doc type lang
एट्रीब्यूट मीन समथिंग, कुछ तो बनाया है इसने। We will go through the index file. मीन करने से समझ में आ रहा है, तो समझ में नहीं आता। हम्म, क्या था? हाँ, पूरा the full document structure bird's eye view, bird's eye view, okay, bird's eye बोलते हैं इसको। Before diving into lines, understand the overall shape. Doc type plus HTML head, invisible metadata. Okay, head is invisible. Body you can see everything. Okay, character encoding, हेड में कैरेक्टर एनकोडिंग, तो बहुत सारे एनकोडिंग टेक्निक्स है, तो कौन सा यूज कर रहा है? व्यू पोर्ट फॉर मोबाइल, टाइटल, मेटा टेक्स्ट इज फॉर एसईओ। मेटा टेक्स्ट क्या क्या है? ओके, ये जितने भी मेटा टेक्स्ट है वो एसईओ के लिए। ओके, एसईओ मेटा टेक्स्ट, टाइटल समझ में आ गया, व्यू पोर्ट और मोबाइल। ओके, व्यू पोर्ट प्लस मोबाइल के लिए, उसको छोड़ देने से भी उसका डिफॉल्ट जो है वो पीसी वर्जन होगा, क्या पता, हो सकता है। और सोशल मीडिया टैग्स, सोशल मीडिया टैग्स, सोशल मीडिया टैग्स, प्रॉपर्टी, ओके, टाइप, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो पता नहीं है सोशल मीडिया टैग्स क्या, वो ओजी, ओजी को सोशल मीडिया टैग्स बोलते हैं। ओके, सोशल मीडिया टैग्स, ये व्यू पोर्ट, एनकोडिंग, टाइटल, मेटा टैग्स फॉर एसईओ, social media tags for that OG ones, or CSS file links. हटा दूं, क्या होगा? ठीक है, बॉडी, skip link, what body, skip to content, क्या है बे? ओ ये छुपा क्यों है? क्या है? ओ, ऐसे करके एलिमेंट भी, ओके, एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं।
कंटेंट में जाने से क्या होता है? स्किप लिंक, ये तो कहीं से तो कनेक्टेड है, स्किप लिंक। अभी कैसे पता चलेगा कौन किससे कनेक्टेड है? आ, ये राइट, स्किप लिंक इधर कनेक्टेड है। पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट 12 पिक्सल, टॉप 60 पिक्स, टॉप -60। ठीक है, पता नहीं, तीनों के बारे में समझना पड़ेगा। ओके ठीक है। इसके बाद हेडर आया, हेडर आया होगा, हेडर साइट नैप मेन, हेडर, हेडर खत्म हो गया, फिर मेन, मेन कंटेंट, फिर न्यूज़लेटर, फुटर, पैलेट, स्क्रिप्ट टैग्स। ठीक है, ओके। The head is for the browser and search engines, humans never see it. Okay. The body is for humans, everyone. Not a tag, it's a declaration. That's the browser. This is an HTML5. Must be very first line. Without it, browsers enter queries mode. They guess how to render. Open incorrect. Okay, देने से तो समझ आता है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है, तो कभी कभी डिफरेंट ब्राउजर्स पे जाएगा तो वो डिफरेंटली एक्ट करेगा, एक सेंसिटिव है। ओके, old browser versions can carry doc type like HTML public, something like that. 4.5 ऐसा लिखता है, 4.0.1 में पहले ऐसा लिखता था, HTML implement to just this, thank God. HTML lang equal to en, the root element, everything else lives inside. The page language is English, okay, lang en करके इधर है ना lang en, okay. Why lang matters? Screen readers pronounce words correctly. Google search uses it to show your page in the right audience. सब तो इंग्लिश है। Translation tools know what language to translate from. Language I would Hindi. BN for Bengali. Okay, that I didn't know. HI for India. Okay, किस ऑडियंस को दिखाना है ये बोलता है, बट ये मीनिंग नहीं करता, मतलब BN राइट, बंगाली BN, कौन से राइट ऑडियंस को दिखाना है वो जज करता है। इस कंटेंट जो भी हो सकता है, चाइनीज में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, बट ये कौन से ऑडियंस को दिखाना है ये जज करता है। ओके, मतलब बोलता है कि पेज लैंग्वेज इज इंग्लिश, लैंग मैटर्स भी करता है बिकॉज screen readers pronounce words correctly versus English. Google search uses it to show your page in the right audience. Translation tools know you what language. Okay, translation tool को अगर उसको बोले कि ये इंग्लिश नहीं है हिंदी है, तो वो हिंदी के वजह से ट्रांसलेट करेगा, और वो कभी कभी गलत भी दे सकता है, सो दैट लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। The head, invisible brain, nothing in the head is visible to the user, it's all instructions to browser, search engine, social media platforms. Okay, media platforms, character UTF, metadata, data about data, character set, universal character encoding। so उसका मतलब है विदाउट ये CAF को ऐसे पढ़ते हैं, विद CAF को ऐसे पढ़ते हैं, हिंदी कैर ब्रोकन।
दी केयरफुल समझ नहीं पाएगा। नमस्ते लिखने से इधर तो नमस्ते समझेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन 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 मार्क दे देगा। अगर मैं ऐसे कैरेक्टर्स दूँ तो ऐसे कैरेक्टर्स नहीं समझेगा, क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हमको कैरेक्टर सेट देना जरूरी है। कैरेक्टर सेट इज इम्पोर्टेंट, some words will crash for sure. ETF8 can represent every character in every human language for emojis. Always include this. Must be the first 1024 bytes to the file. The browser reads this first to know how to decode the rest of the file. That's why it's always the first meta type. Viewport content equal to wide width device width. Feature scale 1. Okay. Terms table type for mobile. Make the page width home screen width. Initial scale 1. Don't zoom in or out by default. Okay, by default don't zoom it. Make it normal as possible. तो वो बोलना चाह रहा हूँ. Without this tag, the browser assumes your page was designed for 980 pixel monitor. Zooms out of it on a phone. With this tag, the browser uses the phone's actual width and your CSS media query work correctly. Phone screen 390 pixel wide with viewport metadata without viewport meta. Browser renders at 390 pixel, your CSS adapts properly readable. Browser renders as 980 pixel, then change to 980 pixel मतलब वो जूम आउट हो जाता है. ओके, जूम आउट हो जाता है, श्रिंक्स हो जाता है, टाइनी, मतलब ब्राउजर जैसे दिखेगा, डेस्कटॉप वर्जन जैसे दिखेगा. चलो वो व्यू कोड बहुत इंपॉर्टेंट है. छोटा छोटा दिखेगा. ठीक है. heading when you bookmark the page. Keep titles under 60 characters. Google truncate and longer. This one is 51. Okay. Meta name description. Long-term deep dives on programming language system using database. The trade-off behind real running system. This is the grey text under the title in Google search result. Oh, it doesn't affect ranking directly, but a good description increases the chance of someone clicks. इसका मतलब यूट्यूब ऐसे डालूं. अरे हाँ, ये लिखा हुआ है शेयर योर वीडियोस विद फ्रेंड्स एज ए डिस्क्रिप्शन, और ये भी लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है इसीलिए काट दिया. ठीक है. सब वेबसाइट का नाम बोलो, पेज. ठीक है. ग्रे टेक्स्ट. ओके. इम्पोर्टेंट है ग्रे टेक्स्ट, तो दिखना चाहिए. ब्राउजर थीम टैग्स. थीम टैग्स में कलर थीम. As a browser, this site has a dark theme. Store bulb form, inputs, etc. will use dark styles by default. On mobile browser, the address bar changes to this color to manage a site. Okay, और ये बार भी चेंज हो जाता है. Open graph tags. Dark by default. उसको लाइट भी करता हूँ. सोशल मीडिया टैग्स ग्राफ टैग भी बोलते हैं. उसी को ओपन ग्राफ इन्वेंटेड बाय फेसबुक. ओके. ओपन ग्राफ क्या करता है? someone shares your link on WhatsApp, Twitter, LinkedIn, Discord, etc. These tags control what the preview card looks like. टाइटल पाइथन में dev लिखा रहेगा ऐसे करके.
राइटिंग एक मिनट। हाँ, ये है भाई, ये समझ में आया, वो तीनों दिखता कैसे है? ऑटो डिटेक्टेड। राइटिंग छोटा क्यों हो गया? ओके, वो भी ठीक है। मिसिंग ओजी इमेज, विदाउट इट व्हाट्सएप ट्विटर show a plain text card with no picture. Adding a preview image would make share look much better. Okay, ठीक है, तो हम बैकलॉग में डाल देंगे दैट इधर डाल देंगे move from work tree to main branch the whole road. वर्क ट्री पे था, मेन ब्रांच में सब लाल। स्टेज किया पहले, स्टेज करने के बाद कमिटेड, कमिट किया। copied the main work tree. Now have all the site code. It's one commit ahead of origin main. Let me know if you would like to be pushed to the report. There were three logo, three images. There are three images. Analyze it and keep it inside image folder and add the logo and do as OG in meta in meta social media tag। सोशल मीडिया टैग बनाना पड़ेगा इसको, तो इधर दिखाएगा मेरा, इसे दिखाएगा। हाँ, खुद से लिखा है। से लिखा है तो सही दिख तो सही रहा है, कितना सही दिख रहा है, डायरेक्ट डाल दो भाई। मिसिंग ओजी इमेज, ओजी इमेज देखते क्या करता है, उसको डालने बोला।
emojis with ट्विटर कार्ड। ट्विटर हो गया, एक्स था क्या? विथ हाइट अल्टरनेटिव। ओके, ये सब ऐड करता है। इसका इमेज कार्ड, ट्विटर कार्ड, कर पूरी स्टफ निकल तेरे को। बट आ गया मेरा ये। साइट नैव इनर, साइट नैव इनर from text to image, which comes out long hyphen word, long hyphen word, ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, बटर भी डाल दिए, ये भी डाल दिए। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। डेवलपर टूल्स पे फॉन्ट प्री कनेक्ट, प्री कनेक्ट क्या है? The relationship tag links the page to an external resource. Start connecting to this server now, even before I need it. The resource comes from a different origin, handles course, cross origin resource, something like that. Why pre-connect? Loading a font requires 3 steps. DNS lookup, loading a font requires 3 steps. DNS lookup, TCP connection, TLS handshake. This takes 100 to 300 milliseconds. Pre-connect starts this process early while the browser is still parsing the rest of the HTML. So at the time the font is actually needed, the connection is already ready. मतलब ये पहले ये रन होता है फिर वो रन होता है, that's it. ब्राउजर पार्स, गूगल एचटी फॉन्ट पहले से ही है, उधर से आके पार्स करके देता है। CSS पार्स होता है, DNS lookup, TCP DNS, okay. Font file, text was visible for 300 milliseconds. ओहो, जितने भी फाइल्स है उसको वो पार्स करता है पहले, 300 सेकंड में सब कुछ पार्स करता है। गूगल फॉन्ट पहले से ही ला देता है, वो पार्स करके रख देता है। क्यों? तो टेक्स्ट इनविज 300 मिली सेकंड के लिए इनविजिबल होता है क्योंकि सब पार्स करके लाता है। फिर वो एक एक करके कनेक्ट करता है, पहले से ही ला देता है। प्री कनेक्ट क्या करता है, वो धीरे धीरे पार्स करता है। फॉन्ट टेक्स्ट अपीयर्स फर्स्ट, पहले से ही प्री कनेक्ट करके ला देता है वो 300 मिली सेकंड में। उसके बाद एक एक कर फिर एक एक करके HTML CSS पार्स करके लाता है। एडिंग प्री
के बाद ओके पहले ब्राउजर पहले डीएनएस टीसीपी और टीएलएस कनेक्ट करके ला देता है 300 मिली सेकेंड में वो चीज़ होता है। फिर एक एक करके पास करके वो आता है, वो आ जाता है, फिर एक एक करके पास करके वो सामने दिखा देता है। ओके, दिस लिंक्ड फाइल इज सीएसएस स्टाइल शीट। Relative path. Look in the CSS slash folder path to index system order matters. Load first because as a CSS user we reverse defined in it, like where action. If you reverse the order, style for pre has no colors. CSS is render blocking. The browser will now not display anything until all CSS files are downloaded and parsed. अगर CSS पूरा डाउनलोड होकर पार्स नहीं किया है, तब तक रेंडर नहीं करेगा, केवल पूरा HTML भी ब्लॉक करके रखेगा. That's why you keep CSS small and load it in header so it arrives as early as possible. CSS style sheet. Uh, style sheet. The body, everything visible. Skip link accessibility. What is this for? Users navigating with the keyboard. Tab key or screen readers. Without a skip link, a keyboard user would have to tap through every nav link before reaching the actual content. The skip lets them jump straight to it. Okay. Something new. Uh, well, ओ मेरे पास अगर माउस नहीं है. ओके, और एक सेक्शन पे जाकर सही है भाई. तो अगर मैं स्किप कंटेंट नहीं रखूँ तो जाएगा नहीं क्या? तो करेगा. तो करेगा. हम्म, तो करेगा. ओके, किस पर स्किप कंटेंट डायरेक्ट कर सकता हूँ. ओके, गॉटचा. गूगल करता है ऐसे. अरे भाई. ओके, नहीं करता. Focus when you press tab and it receives focus, jumps to the element with ID control. Navigation header. This is the top part. Let's break down each piece. Look identical, so why header? Okay, nothing, just parts.
This is introductory or navigational content. Screen reader says nothing. Screen reader says banner. Google bot. This is site navigation. ओके गूगल बॉट या फिर कोई भी स्क्रीन रीडर कुछ भी आ गया तो वो सही से पहचान जाएगा इसीलिए हमको टैग्स यूज़ करना सही से यूज़ करना ज़रूरी है बहुत लोगों को पहुंचाने के लिए ठीक है टैग्स that describes what the content is not not just how it looks tags that describes what the content is not just how it looks your project uses these semantic tags header main section header site header navigation main primary content of the page, a thematic group of content, bottom of the page, navigation block, self-contained content, interactive form. Okay, form भी और नीचे form था container div site में पर div equal to division a generic container it has no semantic meaning uses it when no semantic element fits here is wraps the nav content to set a mix with the central everything the naming site navbar follows BEM notation. Okay, कुछ notations भी होते हैं class के. ठीक है. Component को site nav component को बोलते हैं फिर element a part of the component underscore inner लिखते हैं उसका a part हो जाएगा a variant of the component. This is a naming convention the browser doesn't care. It helps you stay organized. The logo brand. SPA मतलब single page application. Emphasis semantically meaning stressed importance. CSS makes the entry yes. Emphasize meaning matters. The text is in alternate voice. Both render it like by default, but screen renders pronounce differently. Navigation thinks UL and LI use of ads. I don't think so. Unordered list. Each item in the list. Order list. Because nav links are in the list of destinations. Screen readers announce list for items. The user knows how many things are there. Screen readers don't have it show. But if कुछ नहीं screen readers को data route on this is a custom data attribute. You can invent any attribute starting with data hyphen. The browser ignores it, but JS can read it. The browser ignores it. JavaScript पढ़ सकता है उसको. Data dot equal to
home karo out karo. About karo out karo. Then get attribute data route. Okay. ये नीचे क्यों चला जाता है? Thirty five to 50 nav button search. Correct page nav link. Okay. The map link, I believe, nav actions. Search, subscribe, hamburger, menu of the search button. Search button, search trigger button, data action of the search. Okay. Harry's hash pop. What is this? Areas controls palette. Okay. Okay. What is KBD? Okay. Maybe it will explain it. A clickable button, not a link. It triggers an action or navigation. Okay. Action user navigation. The, prevent the button from submitting a form. Type button. Prevent the button from submitting a form. Okay. Button has different characteristics. It used to take any action, and this action is written in JavaScript. Okay. Data action open source. Custom attribute. JS reads this to know what to do and click. JS reads this to know what to do and click. Okay. Here's and it stops to submit a form rather to take an action. Action means anything. Prevents the button from submitting. Tells screen readers clicking. Yes, open a dialog. Tells screen readers. The dialog it controls as ID attribute. Okay. Keyboard tag represents a key. ओके KBD कीबोर्ड टैग ओके इसके अंदर हम लोग कीबोर्ड टैग डाल सकते हैं सी बटन हाँ clicking this open a dialog okay. So it controls as ID palette search to be anything you want hey girl let me talk to you
If I was your boyfriend, never let you go. कंट्रोल के करने से वो भी आ जाएगा कंट्रोल के. ओके. कंट्रोल के. ओके. I like to be anything you want. Hey girl, let me talk to you. Dialogue. Dialogue. So it will open as a dialogue. Ballot. Obviously it has an ID तो कहीं ना कहीं तो होगा ये. तो इस ballot. एक मिनट. Close letter. Wow. Area hash pop. डायलॉग जैसे पॉप होगा और भी होंगे क्या पता अभी मेरे को तो यही पता है. When to use which. A takes you somewhere. B does something. Takes you somewhere. Never use. Play one click. It's not keyboard accessible. The hamburger menu button. Hamburger. Accessible rich internet applications. False changes to true when menu opens. This menu is currently closed. Okay, let's continue tomorrow or somewhere. Now I will end it. It's an hour and I'm exhausted. But yeah, good progress. Learning things. Nice.